Hello, guys. Today we are watching Kurukshetra, episode 2. Um, the previous episode was all about Sanjay, the messenger, and about his uh, conveying of messages between both sides, trying to negotiate, trying to put an end to the war. But we all know how it turned out. The Kauravas said, no, we must fight the Pandavas. They wouldn't budge, bro. The Pandavas even made a good deal. Nope. The Kauravas said, today we are voting for Adharm. So let's see who episode 2 is about and what happens next. Check it out. Whoa. Arjun. मैं ही तो पहले आया। स्वयं अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ केशव, भैया दुर्योधन सही कह रहे हैं, वही पहले आए थे। और इसीलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं निहत्था। Yes. Which one will you choose? ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र, तो किसे चुनोगे? इसमें चुनाव का कोई प्रश्न नहीं। Of course, I will take you. Pikachu, I choose you. Duryodhan thinks he's getting a great deal right now. He thinks he's outsmarted both of these dumbasses in his mind. मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम। Look at the smirk on his face. He thinks he's got it a steal. तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो, उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ केशव। युद्ध प्रतिपल अब समीप था, किंतु दुर्योधन तो अब भी व्याकुल था। पितामह, अब कैसा विलंब? अब तो युद्ध का शंखनाद करे। तुम तो ऐसे व्याकुल हो दुर्योधन, जैसे कोई खेल आरंभ होने वाला हो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हार जीत के लिए नरसंहार होता है। आपके लिए तो खेल ही है पितामह। आप तो प्रण करके आए हैं कि किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और कर्ण जो पहुंचा सकता था वो भी आप ही के कारण मेरे साथ इस रण क्षेत्र में नहीं है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने इतने युद्ध नहीं लड़े होंगे जितने मैंने जीते हैं। I hope we get an episode on युद्ध में Karam. केवल हार और जीत नहीं होती, अपने चलाए हर बाण का मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने लाभ के साथ अपनी हानियां भी गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में क्या गिनोगे जब कुछ बचेगा ही नहीं। पुत्र, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। Yay! मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। भेद तो लक्ष्य अर्जुन, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। Flashback to the childhood. This is what I asked for. क्या हुआ अर्जुन? ये तो सारा मेरा। Hey! जिसे
Yes, 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 yes. नहीं केशव, इनसे कैसे युद्ध होगा? अर्जुन, ये तुम क्या? अर्जुन ठीक कह रहा है भैया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के सत्कार ने दिखा दिया कि कुरुक्षेत्र भले बड़ों को भी अप्रिय था, किंतु अनिवार्य था। अपने कर्तव्यों से बंधा हर कोई इस युद्ध में लड़ने को विवश था, पर मन तो कोई गांडीव नहीं कि जिधर साधा सद गया। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र को जैसे सांप सूंघ गया था, और अर्जुन को ऐसे देख सब स्तब्ध थे। मानव भी, कौरव भी। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। I haven't seen this moment like this, bro. I haven't seen this moment happen like this. Bruh, what? Yo, and they're throwing in 2D animation, bruh. What? ये क्या रूप है आपका? दैवीय भी Parshuram! कोई पार नहीं। Lord Varaha, इतना let's प्रकाश go. जिसमें कुछ सोचता नहीं। ये क्या माया है माधव? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, I'm standing. I'm standing right now. कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? They gave us the Bhagavad Gita in episode 2. किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात। धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहाँ न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन, और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। I'm standing out of respect. अगणित शब्द, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने Wow, we're seeing the flashbacks, man. परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए I hope they show them all. 5 गांव के लिए नहीं बना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी राज्यसभा में अपनी ही कुलपतियों का चीर हरण नहीं रोक पाया। तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन, तो देखो। Yo, they did it so well. Although the animation is stuttering a bit on my side. मेरा ये विश्वरूप यही सत्य है। Oi! ब्रह्मांड, ग्रह,
Bro, this episode is incredible. ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु जड़ चेतन सब में, धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्वरूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, निश्चित ही ये सत्य है, किंतु मैं सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं? कर्म करो पार्थ, शस्त्र उठाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे समक्ष कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है, चाहे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस युद्ध में धर्म तुम्हारे साथ है पार्थ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। उठो पार्थ, धर्म की रक्षा करो, जय और पराजय मुझ पर छोड़ दो और निष्काम युद्ध करो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म। मैं प्रकाश हूँ, मैं ही सार, अंत है जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ, समा जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि, Yo, ऊपर नक्षत्र है। कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। that might be the most beautiful, one of the most, I'd say top 3 most beautiful renditions of the Gita. Even though it was so brief, but it did what it was supposed to. अर्जुन से क्या कहा? प्रतिशोध और उस भगवान का सबसे बड़ा भक्त भीम। दुर्योधन, दुशासन, सामने आओ मूर्छिको, देखो तुम्हारा काल उतर रहा है। मैं यहाँ हूँ भीम। Oh! अपने अनुज का प्रणाम स्वीकार करें भैया दुशासन। और भीष्म उन्हीं में से एक शक्ति थे। Bro, what the hell? Bro, I'm telling you, boy. This animation is crazy. Ha! Yo! तृतीय दिवस आते आते ऐसा लगने लगा कि पांडवों की पूरी सेना को भीष्म अकेले ही अपने बल पर समाप्त कर देंगे। Yeah, no, Bisham actually could have ended the war. He was playing with hacks. Plus, he could choose when he wanted to die. You know, he literally could have. Woo! He's gonna do it again. Arjun, wake up! Wake up, Arjun! की दो अक्षौहिणी सेना को गंगा पुत्र भीष्म ने 2 ही दिन में जलमग्न कर दिया और तीसरे ही दिन भीष्म का आतंक पांडव सेना में स्पष्ट नजर आ रहा था। किंतु कृष्ण धर्म को झुकते कैसे देख सकते थे?
Are we gonna see the lifting of the wheel, bruh? गांधी भीष्म के सामने इतना अस्थिर क्यों? अर्जुन भीष्म को रोको, अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। Yes! Wake him up! Kshetra hai. Bro! Not even the chariot wheel, bro. He took the actual. मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है? भीष्म ने तो अपना इच्छा मृत्यु का वरदान कृष्ण की Yo, he didn't use the chariot wheel. He took his ultimate weapon. उठाने का प्रण लिया। निद्रा में स्वप्न ही सत्य लगता है।